morning everyone. Namaskar. Nice to see you. Good morning. Namaskar. Namaskar bachcha. How are you? Good morning everyone. Namaskar beta. Namaskar everyone. Nice to see you. I hope everyone safe and healthy at your home. Welcome to you all our meditation. Namaskar beta. Namaskar. Namaskar everyone. Namaskar beta. Let us start our today's session by pray to God everyone. So, अभी असेंबली में और हमारे CCA में कौन सा चल रहा है? सॉरी, FCC में which श्लोक we have to learn from the Monday? Good morning Manjeet. Join your hands, close your eyes. Everyone ready for the prayer? Are you ready for the prayer everyone? Sampurna, close your eyes bachcha. Saraswati namastubhyam varade kamerupinim vidyaramba karishyami siddhirbhavatu me sada. Saraswati namastubhyam varade kamarupini vidyaramba karishyami siddhirbhavatu me sada. ओम शांति शांति शांति। अर्थात इस श्लोक का मतलब है कि सरस्वती जी माँ है, विद्या की देवी सरस्वती माँ, मैं अपना विद्या प्रारंभ करने जा रही हूँ। मैं मेरा विद्या अभ्यास है ना, जब हम लर्न करने बैठते, कोई भी हम स्कूल में फर्स्ट टाइम जाते तब उसको क्या बोलते? विद्या अभ्यास प्रारंभ। यानी मैं मेरे लाइफ का एक जो मेन स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है वो मैं करने जा रहा हूँ, तो उसमें मुझे सिद्धि प्रदान करे। ऐसे सरस्वती जी माँ को हम लोग प्रेयर करेंगे, बिकॉज वो इज द लॉर्ड फॉर द विद्या। विद्या की देवी किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं विद्या की देवी? कौन मुझे बताएगा? सरस्वती जी। ये सरस्वती जी माता जिसको हम विद्या की, ये हम उसको विद्या की देवी बोलते हैं। तो हम जब भी हम देखो, आप लोगों को मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि जब भी आप मतलब FCC में बैठोगे, आपके क्लास में बैठोगे, तो वन टाइम ऐसे हम भगवान जी को प्रेयर करेंगे। ओके एवरीवन, चलो मैम को प्रॉमिस करो। कौन ये श्लोक बोलेगा? चलो प्रॉमिस टू मैम, मैम को प्रॉमिस करोगे? ओके, वेरी गुड। ओके एवरीवन, first I'll wish you all congratulations for your result, right? आपके एग्जाम भी खत्म हो गई, फर्स्ट इवेल्यूशन, और अच्छे से रिजल्ट भी आया, सारे बच्चे ने अच्छे से मेहनत की, राइट? तो वैसे ही आप एवरी टाइम आप आपका बेस्ट दोगे। वेलकम एवरीवन, आप आपका बेस्ट दोगे। ओके, कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, हम कभी हार नहीं मानेंगे, बिकॉज यू ऑल आर strong girl and strong boy, right? You all are the brilliant students, so we every time do our best. Okay everyone, let us start. First I'll take your attendance. You all are speak yes ma'am instead of yes ma'am. You all are write down in the chat box any 2 or 3 number and give me answer which one is the smallest. Okay, welcome beta. Which one is the smallest number? Okay everyone, got it? Got it my point? What exactly do in your attendance? Okay, thank you. Okay, Arna, Ansh Dayani,
Write down in the chat box any 2 or 3 number and please give me which one is the smallest. Okay, let's start. Arna, Anshudayani, Arth Bansal, Dhyan Trambadia, Dibyanshu Pradhan, Harsili Shetty, Hattie Parsania, Jayveer Singh Jadeja, Cherish Divani, Kashundra Man, Kirtiraj, Trishiv, Mahia, Manjit, Moksha Kundaria, Param, Urva Detroja, Diya Detroja, Sampurna, Shriya, Vihan Sidodia and Vihan Dekiwadia and Yaksh Pethani. Okay everyone, who is the remaining? Yes, very good Arth, Vihan, very good Moksha, Dibyanshu, Manjit, yes, very good. Dhyan Trambadia, you have to write instead of yes ma'am any number and give me which one is the smallest. Yes, very good, very good. Jayveer Singh. Where is the Shriya? Shriya, give me your answer. Who is the remaining for the answer? Yes, very good. Very good everyone for your correct answer. Okay. Okay, Kirtiraj, Vihan Singh, yes, okay, okay. श्री आपको बेटा नंबर नेम नहीं लिखना था, आपको स्मॉलेस्ट नंबर कंसीडर करवाना था मुझे कि विच वन फर्स्ट यू हैव टू राइट एनी 2 या 3 नंबर एंड देन यू गिव मी आंसर विच वन इज द स्मॉलेस्ट फ्रॉम 2 या 3 नंबर. ओके ओके एवरीवन, फर्स्ट क्लैप फॉर योरसेल्फ एवरीवन फॉर दिस गुड ट्राई. ओके, and which topic we have to going to learn? What we did in our previous, yes, smallest number. देखो संपूर्णा कैसे एक्शन करके दिखाती है. Smallest number, very good Sampurna. In we have to learn in our previous session smallest number. So today we also going to learn our smallest number. Welcome bacha, welcome beta. Yes, Dibyanshu, very good. Okay, very good everyone. Sampurna, please, will you please turn off your camera? Thank you, Shriya. Sampurna, will you please turn off your camera? Thank you, beta. Now, let's first we do small activity regarding our today's topic. Okay, everyone. On this table, first I put 3 number. Okay, everyone, see, be carefully which one. Which one is the smallest from this number? Here I put first the 26 number, then 30 and 21. First we see both numbers. Number 26, 2 is, yes, coming on the place of the tens and 6 1 coming on the ones place. In the middle one is the 30, in this 3 tens and 0 ones, and this one is the 2 tens and 0 ones. So first let's compare with the place of the tens. Let's first see the place of the tens. Okay, on the tens place in this number is 2 tens. And in this card has a 3 tens and this card has a 2 tens. Okay, तो उसमें तो समझ में आ गया कि अभी this one is the biggest number, but we have to find the smallest number. So let's see the place of the ones. In this place, yes, 6 ones. Number 26 has a 6 ones, and in this one 0 ones, and this one is the 1 ones. So which number has a small value? Which number has a small quantity?
Okay, ma'am, I already took the attendance of the Bhavya and Dharmik. Which one is the smallest? Yes, very good. And 21. So, 2 tens, 1 ones, max number 21. समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes or no? Are you all understood? Yes? Okay, thank you. Let's see the another number. Okay. Again, I put it here on this table, 3 cards. 3 cards. Okay, in the second row, yes, 35, 31 and 34. So, let's first see the place of the tens. Okay, in the first card has a 3 tens, second card has a 3 tens and the third card has also 3 tens. So, now let's compare. Place on the ones. In the first card has the 5 ones. First number has a, yes, 5 ones. Right? Let's see the second number. Yes, second number 1 one and 4 ones has a, yes, 4 ones. On from this row, which number has a less quantity? Which number has a less quantity? Yes, 31. 3 tens, 1 ones, max number 31. So 31 is the smallest number from this number. 31 is the smallest number from this number. Okay, everyone? Now let's see the other number. Okay, in the third row, first number is 41, second one is a, yes, 47 and third one is a 44. Right? Okay. So, which one is the, let's first the place of the tens. This one is a 4 tens and 4 tens. Right? In the place of the 1 ones, 7 ones and 4 ones. So, which one is the smallest? Which number has a less quantity? Yes. Now I'll tell you one more thing, kids. फर्स्ट हमने पहले टेंस की कंपैरिजन कर ली होती है. हम लोगों को सारे नंबर सिमिलर मिले तो उसके बाद हम लोगों को वंस की प्लेस को कंपैरिजन करना है. राइट? तो हम लोगों को जो भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं, उसका आंसर इजीली मिल जाएगा. Okay, first we have to compare with the place of the tens and then we get the similar number from the number tens. So we have to go with, yes, place of the ones, and then we have to see place of the ones which number in the smallest from the place of the ones. So on place number 1, 41 is the smallest number from this line. Okay, 4. Yes, very good, very good. 44 is both are similar number, very good. Yes, and 41 is the smallest number because in this number has 4 tens and 1 ones. That's why this number is the smallest number from this line. Okay, now I will show one more line. Okay, and it is the mixed number. It has mixed number. Okay, first I'll put it here 28. Then I'll put it here number 6 and then one more number 32. Okay, kids, first you have to compare 2-digit number, 1-digit number. Okay, in this card has a 2 number, 28, and this card has a 6 number, and this card has a 32 number. So we will get
we will get our smallest number easier, because yellow card has only one number. Yellow card has only one number, and it is a single digit, yani it is coming on the place of the ones. And number pink card has two numbers, 28, 2 tens, 8 ones, and that orange one has a 32, 3 tens and 2 ones. So which one is the smallest number? Yes, 6 1. So are you understood? Are you understood all? Let's recall quickly. In the first row is the 24th, is the smallest number. Second row, in the second row, 31 is the smallest number. In the third row, 41 is the smallest number. And the last one, fourth one, number 6 is the smallest number. Okay, everyone? Understood, yes or no? The smallest number concept, did you understand or not? If you have query, please, without any hesitation, you can ask me, you can call me between the 5 to 7, no problem. Okay? Because जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक मैम भी आगे नहीं जा पाएगी. It is compulsory for you. जब आपको समझ में ना आए तो मैम को आप बता सकते हो. Understood? How we identify smallest number? Okay, everyone? So, and one more thing, you also do this activity at your home with any of the number, any of the flash card, any of the plain paper, right? It is not necessary कि आपको भी मैम के जैसे कार्ड बनाना है. बनाओ तो well and good. Otherwise, you can use the plain paper, you can use your notebook, right? Anything you can use and do this activity. Okay, everyone? So, take out your pencil, eraser and your worksheet. And 2 things we can't forget, your beautiful smile and fresh mind. Okay, everyone? Are you all ready for the today's class? And are you understood this activity, this card activity with the smallest number? Yes or no? Okay, thank you everyone. Okay, let us start. First, on the top we have to write on the top CW. After that, yesterday was the 3rd, right? Yesterday was the 3rd date. So after 3 which number will come? After 3 which number will come? Can anyone tell me? Yes, 4. So today is 4th, and which month is going on? Which month is going on? August, right? And August is the 8th month of the year. August is 8th month of the year. So 4th August 2021. After that, yesterday was Tuesday. After the Tuesday, Wednesday. So we have to write it here, Wednesday. And what is the spelling of Wednesday? WEDNESDAY. Wednesday. And Wednesday is the third day of the week or 4th day of the week? Wednesday is 3rd day of the week or 4th day of the week? 3rd day, right? Very good. देखो, हम एवरीडे सारी चीजें लिखेंगे, याद करेंगे, तो आपका जीके का कॉन्सेप्ट भी इजीली उसमें आप बाय हार्ट कर पाओगे, लर्न कर पाओगे. ओके, हम स्टार्ट फ्रॉम दी डे 1 से हम लिख रहे हैं सारी चीजें, राइट? तो अभी तो आपको डेज ऑफ द वीक भी आ गए होंगे अच्छे से. लेट्स ट्राई टू रीड दिस हेडिंग. राइट द स्मॉलेस्ट नंबर. This half page is your class work and another half page is your homework. Okay, everyone? First we have to mention for our reference here tens and ones. Tens and ones. Okay? क्योंकि हम टेंस और वंस के साथ काम करेंगे तो हम लोगों को कोई भी क्वांटिटी में, काउंटिंग में हमारे लिए इजी वे हो जाएगा. देखो, 1 टेंस यानी
दिस इज द 10 थिंग बंच। कोई भी हम 10 चीज लेंगे, 10 चीजें लेंगे, उसका एक 1 बंच यानी 1/10। तो हम 2 थिंग्स वहां पर रखेंगे तो आप लोग इजीली काउंट कर पाओगे। इट मीन्स 20, इफ 20 थिंग्स आर देयर तो यू कैन जस्ट फास्टली काउंटिंग, दिस इज द 2 10, राइट। तो हम 10s और 1s के साथ ही सारा हम हमारा क्लास वर्क करेंगे। ओके एवरीवन, and you also do this activity with any of the things. Again I'll repeat this thing because आप activity करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि you can know everything in proper way. आप नहीं करोगे तो मैम को नहीं पता चलेगा कि आपको अभी तक आया है कि नहीं आया है, right? Okay, so please do activity if you able to do this activity with me, so well and good. Otherwise you can do this activity after finish our session. Okay, okay everyone, and please click its picture and send it to me. So let us start. Let's first see the place of the tens in this row. In this first number has a 2 tens, 1 ones, 21. In the second 5 tens, third number has a 3 tens, and fourth number has a 4 tens. So we get the idea. Okay, which one is the smallest? In the place of the tens, we get the smallest number 2. Okay, so हम लोगों को अभी इजीली हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया क्योंकि 10 ही यहाँ पर 2 10s है और रिमेनिंग नंबर के पास सेकेंड नंबर के पास 5 10s है, थर्ड नंबर के पास 3 10s है, एंड नंबर फोर्थ है 4 10s. So we get the easily our smallest number, and after that if you compare the place of the ones, no problem, you can compare with the place of the ones also. Let's compare the place of the ones. In the first number has a 1 1, second number 0 1, third number is a 7 1, and fourth number has a 1 1. So smallest number is the 21. Smallest number is the 21. Param, what happened beta? Param, 21 आएगा बच्चा, not 20. Okay, so first we take this number and we have to write it here 21. So after that let's go ahead, let's see the second line, let's see the second trend. Okay, and before we start second line, I'll give you 2-3 instruction about your classwork, homework. One more thing, parents, listen, be careful. Whenever you write any of the number, either in notebook, either textbook, either worksheet, you have to instruct your kid टच द डाउन लाइन. भले क्लास वर्क मेरे साथ बच्चे कर रहे फिर भी आप होमवर्क करवा रहे हो तो आपको उसको इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको डाउन लाइन लोअर लाइन को टच करके ही लिखना है. और हम कोई भी नंबर कई बच्चे की बुक मैंने चेक की है तो उन्होंने नंबर नेम लिखे हैं तो एक एक बॉक्स में एक एक डिजिट लिखा है, ऐसे नहीं, सॉरी एक एक लेटर लिखा है, ऐसे नहीं करना है. मैं जैसे क्लास वर्क करवा रही हूँ वैसे ही आपको करना है, राइट. मैंने जस्ट ऐसे लिखा कि नाउ यू हैव टू राइट द नंबर नेम ऑफ द 21. तो वन बॉक्स में हम 21 नंबर लिखेंगे, साथ में बाजू वाले बॉक्स में हम डैश करेंगे एंड वो बॉक्स स्किप करके फिर हम 21 नंबर नेम स्टार्ट करेंगे, राइट. और 20 का फर्स्ट लेटर कैपिटल में आएगा, जब हम 1 का लिखेंगे उसके साथ तो वो स्पेलिंग वो लेटर स्मॉल में ही आएगा. You have to mention only the first letter in the capital, remaining all letter in a small case. तो इस छोटी छोटी बातें आपको माइंड में रखनी है. प्लीज कीप इन योर माइंड दिस ऑल स्मॉल थिंग्स एंड देन योर किड्स do your class work and homework. Okay everyone? Okay, and please mention every single day CW, HW and date, day and the year. जिन्होंने लिखा है उसका कुछ इश्यू नहीं है, बट जिन्होंने नहीं लिखा है वहां पर हम लोगों ने मेंशन कर दिया है कि काइंडली प्लीज राइट डाउन CW, HW and
date, year, all the things. Okay parents, so make sure जब भी बच्चा क्लास वर्क होमवर्क करने बैठे तो आपको उसको बोलना है कि मैम जैसे बोलते हैं वैसे ही आपको क्लास वर्क होमवर्क सब कुछ मेंशन करना है. और वन मोर थिंग पेरेंट्स, प्लीज डोंट यूज एनी ब्लू पेन या रेड पेन इन योर किड्स बुक. आपको जो भी मेंशन करना है वो पेंसिल से ही करोगे. पेन इज नॉट अलाउड. ओके एवरीवन, if you got all the points please write down in the chat box yes ma'am, because next time एक कुछ ना हो और अच्छे से पूरा हमारा स्मूथ जाए. अभी से आप प्रैक्टिस करवाओगे मैम तो बच्चे भी यूज टू सारी चीजों के लिए हो जाएगी. ओके, क्योंकि once they have to going with this part and after that they can't face any trouble. ओके एवरीवन, तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोग दिमाग में रखना. और जब भी बच्चा क्लास वर्क होमवर्क करवाने आप बैठो, बच्चे मेरे साथ भी करे तब भी आपको ये करवानी है. यस मैम. ओके ओके मैम, प्लीज विल यू प्लीज कॉल मी 5 to 7 ध्यान के पेरेंट्स. ओके ओके मैम, ध्यान त्रामबड़िया के पेरेंट्स प्लीज. हाँ ओके मैम, थैंक यू. ओके एवरीवन, तो ये छोटी छोटी सारी बातें हम दिमाग में रखेंगे ताकि हमारा बच्चे को भी यूज टू हो जाए सारी चीजें नीट एंड क्लीन लिखने की. भले सबने अपना बेस्ट ट्राई किया है फिर भी वी हैव टू गोइंग विथ अवर बेस्ट पार्ट. ओके, लेट्स सी हियर विथ अवर थर्ड लाइन इन द थर्ड रो. number in the first 33, second one is 23, third one is 32 and fourth one is 42. Right? So first we mention the tens ones for our reference. Okay everyone, so let's find out. First we see the place of the tens. Is the first number has a 3 tens, second number has a 2 tens, third number has a 3 tens, fourth number has a 4 tens. So which one is the smallest number? Which one is the smallest number? Dibyanshu, are you able to hear my voice? Yes. Namaskar beta. Will you please tell me which one is the smallest number from this line? 2, 3, 4. Yes, very good. देखो पहले हम ऐसे टेंस की प्लेस देखेंगे और बाद में हम वंस की प्लेस देखेंगे. ओके, ताकि हम लोगों को हमारा स्मॉलेस्ट नंबर इजीली फाइंड आउट हो जाए. थैंक यू दिव्यांशु फॉर द करेक्ट आंसर. एंड दिव्यांशु for the number 23, how many tens and how many ones? 2 tens, 3 ones. Yes. Wow, very good. Clap for Dibyanshu everyone. Very nice. Thank you. First we tick on the number 23. Thank you beta. And then we have to write it here number 23. Let's see the another line. Okay, in this row. Now will you please turn off your camera beta Dibyanshu? 80% yeah, turn off your camera beta. Thank you. बेटा ऑफ कर दीजिए बेटा ताकि पूरी स्क्रीन दिखाई दे सबको. ओके बच्चा, turn off your camera beta. Thank you. In this row, first one is a 28, second one is a 36, third one is a 44 and fourth one is a 22. Okay everyone, so let's first see the place of the tens. The first number 2 tens, second number 3 tens, third number is a 4 tens and fourth number is a 2 tens. So ये दो नंबर के पास तो 3 tens and 4 tens है, तो but of course this both are the biggest number. So let's compare with two number 28 and 22. Okay, so let's see the place of the ones. First number has a 8 ones and the fourth one number has a 2 ones. So which one is the smallest? Which one is the smallest? Very good, 22. The first we take the 22 on the 22 number and then we have to write.
Very good everyone. Ansh, Devianshu, Samparna, Heti, Jaiveer Singh, Ansh, Sampurna, Jaiveer, Dhyan, Shreya, Harshili. Where is the remaining student? Please give me answer. Krishiv, Vihansi Dodia, Vihande Kivadia, Yaksh Pethani, Param, Kirti Rati, Jhala. Each and every student will be give me answer. आप आंसर दोगे बेटा तभी मैम को पता चलेगा, राइट, कि आपको आया है कि नहीं आया है. Now let's see the next number. Okay, in this row, first we have to mention tens and one. The first number is a 41, second one is a 26, third one is a 34, fourth one is a 40, fourth one is a 43. So let's first see the place of the tens. First number is a 4 tens, second number is a 2 tens, third number is a 3 tens, and fourth number has a 4 tens. So first and last both number are biggest, right? Because both number has a 4 tens. So let's compare with two number. Let's see the again place of the tens. Second number has a 2 tens and third number has a 3 tens. So which number is the smallest number? Yes, very good. 26. बिकॉज हमने यहाँ पर टेंस के प्लेस पे कंपैरिजन किया तो रिमेनिंग जो नंबर है उसमें 4 टेंस, 3 टेंस एंड 4 टेंस है. एंड सेकेंड नंबर हैज 2 टेंस एंड 3 6 वंस. सो वी गेट द आवर स्मॉलेस्ट नंबर. 2 टेंस, 6 वंस makes number 26. Makes number 26. Okay everyone, understood or not? If you face any trouble, will you please tell me कि मैम यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है. You can tell us, you can call me in between 5 to 7 without any hesitation. Free to call us. Everyone, so please feel free to call us whenever you face any problem. Okay? But बच्चे को समझ में आना चाहिए. Okay, let's see this line. This is the first. We have to mention the tens one, and then we have to start. Number first is a 29. Second number is a 24. Third number is 37, and fifth one is a 50. So let's compare. First, the place of the tens. First number is 2 tens. Second number is 2 tens. Third number is 3 tens. Fourth number is a 5 tens. So these both are the biggest number comparatively first and second. So let's see the first and second number with the place of the ones. Number 29. Yani number first has 9 ones and second number is a 4 ones. So which one is the smallest? Which one is the smallest? 24. So 2 tens, 4 ones makes number 24. 24. And this is your, this half page is your today's classwork, page number 18, and remaining half page is your homework. First we have to write it here, homework, and then we have to start. Okay everyone? So please show me your today's classwork. Show me your today's classwork. Done. Okay ma'am, it's okay done, but please मुझे क्लास वर्क दिखा दीजिए. सबका हम देखने के लिए पॉसिबल नहीं होता है, फिर भी जितने बच्चों का हम ऑन स्क्रीन देख ले उतने बच्चों का क्लियर हो जाए, और जो रिमेनिंग स्टूडेंट है वो प्लीज मुझे क्लिप निकाल कर भेज दीजिएगा. एटी पसानिया, टर्न ऑन योर कैमरा. यस विहान, शो मी योर बुक. विहान, हाँ बुक दिखाओ बेटा. यस वेरी गुड. यस वेरी गुड बच्चा, थैंक यू. वेरी गुड बेटा. यस देखो विहान ने कैसे सब कुछ लिखा है. CW, फिर डे लिखा है, डेट लिखा है, सारी चीजें आपको एवरीडे मेंशन करनी है. यस एटी, एटी ऊपर रखो बेटा, आपका थोड़ा क्रॉस में जा रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है. यस वेरी गुड. यस एटी, आपका मुझे डे नहीं दिखाई दे रहा है बेटा. यस ओके. ओके हेती, गुड बेटा, थैंक यू हेती. विल यू प्लीज टर्न ऑन ऑफ योर कैमरा
ताकि रिमेनिंग स्टूडेंट का हम देख पाए. Yes, ma'am. Jaiveer Singh, please turn on your camera, ma'am. And again I will repeat this thing. Please do activity with any number for smallest number. Okay? आप activity नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. Yes, जयवीर. Yes, बेटा, very good. जयवीर, डे मेंशन किया है ना बेटा? ओके, वेरी गुड. डे भी मेंशन करना है. इट इज कंपल्सरी फॉर एवरीवन. ओके? हाँ. ओके मैम, थैंक यू. ओके, थैंक यू. संपूर्णा. यस बेटा, यस यस, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड. थैंक यू संपूर्णा, वेरी गुड बेटा. यस, डन. रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज. यस, माहिया. माहिया, आपका दिखाई नहीं दे रहा है बेटा मुझे. रिमेनिंग स्टूडेंट प्लीज क्लिक इट पिक्चर of your class work and send it to me. Okay? So I hope did you enjoy this session and understood this concept, the smallest number. Please do your class work and homework neatly. We will meet tomorrow again with new concept activity. Till then, stay home, stay happy. Namaskar. Bye bye everyone. Stay home. Welcome ma'am. Stay home, stay happy. Welcome ma'am.